Hello students, you can write your name in the chat box, live chat. Hello students, you can write your name in the chat box, live chat. So let us start. Most of the students have joined. First of all, I'll start with the paper pattern. Since our college is autonomous, we have changed the paper pattern so as to make it more student friendly. Question number 1 will be objectives. In that A and B, two parts will be there. MCQs and true or false. Okay. Total 15 marks, some will 20 marks, some will be there. You have to attempt 10 each of MCQ and true false. Clear? 12 will be given. You have to attempt again 10. But you can attempt full 12. You will give marks to all the correct answers. Okay. But maximum marks will be 10 each. Clear? So attempt all the 12 questions in objectives, MCQ as well as true false. Clear? From question number 2 to question number 8. Okay. You have to solve any 4 questions. Okay. So that will account for 80 marks. Clear? So you have a good chance to leave any one chapter for option. Clear? So from 2 to 8, there are 7 questions. You have to attempt only 4. Okay. The last question, question number 8 will be a theory question. Okay. So don't count theory question in those 4 questions. Solve 4 sums, then attempt theory as a extra question. Is this clear? But do write theory. Okay. In case there is some mistake which you don't understand while solving, you may lose out marks in that sum. But if you write theory, okay, there is scope that you learn good marks. Okay. Is the paper pattern clear? Okay. Do attempt all the objective questions. They will say attempt any 10, but attempt all. Okay. Now there are 4 chapters you have to study. First is final accounts. In final accounts, either you will get a sum on admission of partner, okay, or retirement or death of partner. Okay. So at least 2 final account sums you can expect. Okay. So retirement and death are very similar. Okay. So you can expect one at least on admission and one on either retirement or death. Is this clear? Okay. Then second will be piecemeal distribution.
Okay. So there may be one question, or in some set there may be more than one. So you will be lucky if you find two sums in the paper on piecemeal distribution. You can score full marks, okay, in this question. Very simple. Okay, even final account is simple. Some students find admission retirement little bit tricky, but no problem. Okay. So if you get two final accounts and two piecemeal distribution, there is no question only of studying others. But I'll teach you all the chapters. Third is amalgamation. Okay. So at least one, minimum one question will be there. And last chapter, conversion of partnership firm into a limited company. Okay. So in all practical, question 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 questions will be there. Okay. So obviously one each, and from any two topics, one more question will be there. So on two topics, two questions will be there, and uh, one question from all the topics will be there. So such 6 questions will be there. Okay. So if you are lucky, you will find two sums of piecemeal and two sums of final accounts. If you are good with amalgamation, you may be lucky if you have two sums on amalgamation. Let me tell you, amalgamation and conversion are very similar. Only change is that in amalgamation, two companies are there and they get amalgamated. Okay. In conversion, there is one sole trading or a partnership firm is given that will be converted into a new company. Clear? So today I will try to cover a final accounts, piecemeal and objective questions. Okay. And in the evening, I'll take lecture on amalgamation and conversion. So today itself, everything will be done as you have paper tomorrow. Okay. In the evening, I'll take lecture by around 7:30. So by 8:39, it will be over. Okay. So let us start. I'll start with piecemeal distribution. Okay. I have taken a dummy sum. First I'll teach you the theory part. Okay. Now piecemeal distribution. This is one kind of dissolution sum. This is one kind of dissolution sum. Okay. In dissolution, what happens? Company is closed down. Okay. Company sells all its assets and pay liabilities. And if anything is left, okay, it is repaid to partners' capital in the way of capital repayment. Clear? So piecemeal distribution is a minute study of dissolution. In dissolution, in 12th standard, you studied dissolution. Okay. But in SY BCom, you have to study piecemeal distribution. In piecemeal distribution, you have to uh, pay or distribute amongst the liabilities whatever cash is realized. As soon as cash is realized, it is given away to the parties that owe you. Clear? So what will be given in the question? A balance sheet will be given to you. Okay. Old firm's balance sheet, which is going to get closed. Then adjustments will be there. Now, what kind of adjustments? First, most important adjustment is they will provide you when they sell asset, they will provide you all the cash which is realized by selling the assets. Okay. They may provide you date wise or just in serial number 1, 2, 3, first relation, second relation. Okay. So it doesn't make any difference in your procedure. Okay. So apart from balance sheet, will be given three types of adjustment. First adjustment will be they will tell you how much assets are sold for, that is how much cash you realize. Clear? Then second most important adjustment is they will provide you details about dissolution expenses. Okay. So when you undertake to sell off all the assets and pay liabilities, there will be some expenditures will be incurred, isn't it? So they will provide you that some estimated expense was there for dissolution, and they will also provide you a figure which was actually spent towards this dissolution expense. Okay. So this is special item. If you understand this, okay, you can avoid a big mistake because this will be the very first adjustment which you will be solving. Clear? So if you go wrong with this adjustment, at least you will lose 10 marks. Okay.
Then next, they may tell you that some assets are taken over by partners. Okay, they will provide you value at which they are taken over by the partners. So in question, you will find balance sheet, and then three types of adjustment will be there. And at the bottom, always read what they have asked. Okay, because on this chapter, you may expect one small question. Okay, only to make one excess capital statement. Okay, so that will be for 10 marks. Okay, so they may ask you only to prepare excess capital statement, that will be for 10 marks. If they ask you to prepare statement of excess capital as well as piecemeal distribution, it will be for 20 marks. Okay, so if it's a 20 marks question, you have to prepare this excess capital statement. So even in a 20 marks question, this statement will carry 10 marks, and the second table will carry 10 marks. I'll copy the format here. I'll shift it this side. Just wait. Hmm. Look here. At the bottom, I have uh, shown here the format of statement showing excess capital. This will be for 10 marks. Okay. And statement next to that is statement showing piecemeal distribution. This will be for 10 marks. Okay. But this first statement can be asked separately for 10 marks. Even if it's a combined sum, that is statement of excess capital as well as statement of piecemeal is to be made, then this statement becomes very important. Why? This itself will get you 10 marks. Okay. Then these statements give you the order of payment in which you have to pay to the partners. Okay. So half of the part in the second table also depends on this table. So we can say if it's a 20 marks question, this table is for 15 marks. Did you get it? So this is very important part. Okay. So I'll show you how to make it. So for sure you'll get good marks in this chapter. Okay. And it is not very difficult. I'll take at least two sums on this. Okay. Now, as I told you, we have to make two statements. One statement of excess capital, and then say statement showing piecemeal distribution of cash. Clear? Now, as I told you, we'll first sell off all the assets. We'll realize cash. Clear? Then in what order, which order we have to pay off the liabilities. That is most important. Okay. The very first thing you will be paying is realization expenses. As I told you, in some, they will provide some adjustment. Look at this B adjustment. Okay. This adjustment, we have to make provision for this adjustment first. So while paying, first provide for estimated realization expenses. Clear? Okay, so that will be the first payment to be made in our second table. Clear? Now, about remaining liabilities, first of all, first preference will be given to any government dues. If a company hasn't paid any GST, okay, then or any taxes, then they have to pay it first. Then outstanding wages, anything which is unpaid to workers, okay, employees liabilities will be paid along with this. Clear? So very first thing you have to pay is realization expense. Then comes preferential liabilities. We call them preferential because we have to give preference to them. Clear? So government taxes, employees dues, outstanding wages, outstanding salaries, these are preferential liabilities. Okay. This may come in your MCQs also. Okay. Then we pay secured loans or secured liabilities. Clear? Suppose we have taken bank loan by giving them security on machine. Then when we sell the machine, first of all, we'll pay the bank loan. Clear? Whatever amount is realized on that security will be first given to secured loan. Okay. If excess is left, then we can use that to pay other liabilities. Is this clear? Okay. Then unsecured liabilities like creditors, bills payable, outstanding expenses. These are unsecured on which no security is provided. If there are more than one unsecured liability like creditors and bills payable, then in which order you will pay them? In case more than one liability is there under unsecured liabilities, then you have to pay them in their proportion. Say for example, creditors
are outstanding 10,000. Okay. And bills payable are outstanding rupees 20,000. Okay. Just example. In case you have 30,000 rupees, you will definitely pay off both the liabilities, 10 and 20. Clear? Understood? Okay. But if you don't have entire amount, suppose you have only 7,500, you have only 7,500, then how you will pay them? You can't pay creditor because he is unsecured, but bills payable is also unsecured. So even he will claim share in this 7,500. In such case, we have to pay them in their uh, outstanding amounts ratio. See, 10,000 and 20,000. We can see 1:2 ratio. Okay, so you can pay 2,500 to creditors and 5,000 to bills payable. Are you getting it? So this will happen only in case of unsecured liabilities. Okay, this question will not arise in case of other liabilities. Is this clear, students? Okay, so in case of unsecured liabilities are there. Okay, if amount is insufficient, we pay them in their ratio of outstanding amount. Clear? Now, once outsiders are paid, okay, see till now 1 to 4 all are outsiders. Okay, clear? So once outsiders are paid, we come to partners. So any partner who has given loan, he will be paid first, isn't it? After that, we start paying partners capital. Okay. Now partners may not bring equal capital. Some may bring more capital. Some may bring less capital. Then we have to decide order in which we have to pay them. Clear? And for this, we make this statement. Number one, under required, I have written this statement of excess capital. The partner who has contributed more capital, definitely he will claim early payment, isn't it? To the extent how much he has paid extra. Are you getting it? So this first statement, okay, is used. See, from this statement we'll get the payment order, the order of payment in which we have to pay to partners. So for this payment number 6, that is while paying to the partners capital, we have to adhere to the statement of excess capital. Okay, this statement will give us whom to pay first. Okay, it will give us answer in 3 lines, that pay Mr. A first, then pay A and B, and third line will be pay all in profit sharing ratio. Okay, I'm telling you again and again, this is very simple. Just pay attention, you will understand everything. You can solve any sum. Okay, if you pay attention carefully. If you understood everything till now, please type yes. Okay, so I can proceed further. If you want anything to be repeated, you can mention it. Okay. So let us take one sum. I'll just keep it here only. I'll copy the formats. Okay. The solution format is for different questions. So I'll just make changes if required. Okay. So first of all, let us read the question. Okay. And we'll make the changes accordingly. A, B, and C were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 6:3:1. So this is PSR, profit sharing ratio. Okay. 6:3:1. Clear? And names of partners and write A, B, and C. Okay. PSR is very important in this sum. Okay. So total number of shares are total of these 3, 6, 3, 9, 1, 10. So 10 shares are total number of shares. Out of that, if 10 rupees are earned, A will get 6 rupees, B will get 3 rupees, and C will get 1 rupee.
Okay, so that's what PSR indicates, profit sharing ratio. Clear? So we need ABC. Yes, ABC is there. So as I told you, this statement of excess capital is most important. Okay. Sometimes in paper they will ask you just to make statement of excess capital. So when you look at this question, you like, if a similar question is given, just see what is asked. So while giving the same question, they may just ask you to prepare statement of excess capital. That will be only for 10 marks. Okay, so be careful. Okay. Okay. So first of all, you will draw a particular column. Then if two partners are there, you will draw two amount columns. If three partners are there, you will draw three columns. Clear? So in this sum, opening balances, three partners are there. So we have drawn three columns. So first step will be you write opening balances. Okay. Now capital of A is 2,50,000. B is, for every step you will get marks. Okay. So attempt as much as possible. 160 and third partners capital is 1 lakh. Clear? Okay. Now next step is in the sum, if reserves are given, okay, reserves will be on the same side of liability. So just see, creditors is a liability, bills payable is a liability, employee dues is a liability, general reserve, yes, that is a reserve. Okay. So general reserve is nothing but past profit which belongs to partners. Okay. So we have to distribute that reserve amongst the partners. Okay. All the three partners, they all have a claim in that. Clear? So what is the amount? 40,000. What is the amount of general reserve? 40,000. Clear? And in which ratio we will distribute that? 6 is to 3 is to 1. That is 6 by 10, 3 by 10 and 1 by 10. Okay. From where I got this 10, I added all the shares. Clear? So now how to get A's share? Very simple. I'll show you here. Okay. How much is the amount of general reserve? 40,000. So 40,000 into A's share is 6. So into 6 divided by 10. Okay. This is how you'll get for A. Are you getting it? So same way for B, how you'll calculate? 40,000 into his share is 3. Okay. So you'll multiply it by 3 out of 10. Clear? Same way for C, 40,000 into 1 by 10. Okay. So you can post answers in the chat box. Okay. So it comes, you can use calculator and post the answers. 24,000, I think. 24,000. Then 40,000 into 3 by 10, 12,000. Then 40,000 into 1 by 10, 4,000. Okay. Now 4,000. You can cross check with 24,000. I by mistake wrote bigger amount. You can cross check by adding the distributed amount. Okay. 24 plus 12, 36 plus 4, 40. Okay. So it's correct. Total is up to 40,000. Now add reserves to your opening capital. Okay. Okay. Now, apart from general reserve, you may have P&L account on the same side. You may have P&L account on the same side. So what you will do, next to general reserve, you will add one more line and you will write P&L. Okay. You can write P&L. Okay. When this is to be done, if your sum has general reserve plus P&L, instead of general reserve, they may give only P&L. Then same treatment. ओके अगर ये जनरल रिजर्व के बजाय अगर यहाँ पर लिखा होता P&L एंड अमाउंट 40,000 है तो सेम वे हम लोग उसको बांट देते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही. अगर दो है दोनों को बांटना है. इफ टू आइटम्स आर देयर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन सेम रेशियो. ओके मेक श्योर दैट इट इज ऑन द सेम साइड. वो
कैपिटल के साथ वाले लाइन में ही है, अपने बाजू में ही है, अगर ओके ना, तो उसको ऐड करना है। व्हाट इफ पीएनएल अपीयर्स ऑन द ऑपोजिट साइड? पीएनएल जो है वो दोनों साइड में आ सकता है। अगर तुम्हारे ऑपोजिट में खड़ा है तो वो नेगेटिव में है। क्या है वो? नेगेटिव में। देन ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन द सेम फैशन, बट यू विल माइनस इट। व्हाट यू विल डू? यू विल माइनस इट। ओके ना, तो सिर्फ लिखना है माइनस पीएनएल। ओके, नो नथिंग चेंजेस, सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट माइनस साइन आ जाएगा और अमाउंट जो भी रहेगी उसको हम लोग माइनस करेंगे। समझ गए? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, अगर वो 20,000 है तो कितना आएगा इधर? -12,000 आएगा, बराबर आधा आधा है ना, 40 का आधा होता है ना 20,000। इधर आएगा 6,000 -6,000, समझ रहे हो? हो जाएगा -2,000। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल एड जनरल रिजर्व माइनस पीएनएल, समझ गए? ओके, अगर पीएनएल होगा ऑपोजिट साइड में तो, अगर सेम साइड में होगा कैपिटल के तो क्या करोगे? ऐड करोगे। ओके, अगर वो दूसरे के पाले में, सामने वाले की पार्टी में है तो उसको माइनस करना है। समझ गए? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आई जस्ट रिमूव दिस एडजस्टमेंट। ओके, हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ रिजर्व था, ओनली रिजर्व वाज देयर सो आई एडेड। ओके, अगर और एक रिजर्व होता तो भी ऐड करता था, 3 रिजर्व थे तो भी ऐड करते थे, कितने भी रिजर्व सेम साइड पे है, अपने साइड पे खड़ा है तो ऐड करना है। अगर ऑपोजिट साइड में खड़ा है, ऑपोजिट में सिर्फ एक ही आ सकता है, क्या? पीएनएल। समटाइम्स कुछ डिफर्ड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस लिखा हुआ अगर असेट साइड में कुछ भी है तो उसको माइनस करना है। कौन सा रेशियो में? अगेन पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही यूज करना है। समझ गए? इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ व्हाट वी गॉट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। ओके, तो यहाँ तक तुम लोग के 3 मार्क्स हो गए। समझ गए? यहाँ तक 3 मार्क हो गए। इज दिस क्लियर? वेरी सिंपल, आप स्टेप बाय स्टेप करो, हर स्टेप में मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ओके, ये फॉर्मेट जो लिखा हो ना वो याद ही रखना हम लोग। क्लियर? फर्स्ट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंसेस, देन जो भी रिजर्व है, एक दो है, ऐड करना। ओके, एक है तो ये एडजस्टमेंट 3 मार्क्स हो गया, और एक एडजस्टमेंट रहेगा और एक पीएनएल रहेगा तो और एक मार्क ऐड हो जाएगा। क्लियर? देन यू हैव टू राइट पीएसआर। पीएसआर हम लोग को मालूम है 6, 3 एंड 1। ओके, इसका 1 मार्क हो गया। आर यू गेटिंग दिस? एवरी line, every row has 1 mark. क्लियर? हाँ, ये तो सिंपल 1 मार्क आ गया। नाउ अभी आपको निकालना है कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर। व्हाट डज इट मीन? ओके, लुक एट सी। सी को देखो, एक शेयर है लेकिन उसका कैपिटल कितना है? 1,04,000। और वन शेयर ही हैज ब्रॉट इन 1,04,000। ओके, सो इफ वी टेक सीज कैपिटल एज बेस, अगर ए बोले अरे मैंने एक शेयर के लिए 1,04,000 रुपया लाया, तो 3 शेयर के लिए तेरा कितना होना चाहिए था? 3,12,000 होना चाहिए था, बराबर कि नहीं? ए को बोलता था तेरा तो 6 लाख के ऊपर होना चाहिए था, 6,24,000 होना चाहिए था। इजंट इट? मतलब सी का पर कैपिटल पैसा ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तो डेफिनेटली अपने आंसर में ना सी का कैपिटल एक्सेस आएगा अपने को लास्ट में। क्लियर? सो व्हाई वी मेक दिस स्टेटमेंट? टू फाइंड आउट विच पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड मोर देन हिज पीएसआर। ओके, पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सबका कैपिटल जो है पीएसआर में होना चाहिए था, लेकिन सब लोग अलग अलग अमाउंट लाते हैं, अलग कोई ड्राइंग्स कर देता है, कोई बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो अमाउंट सेम रेशियो में होती नहीं है। क्लियर? सो मोटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू फाइंड आउट हुज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज मोर देन द पीएसआर। क्लियर? सो first we started with opening balances, we added general reserve, then we got adjusted capitals. Is this clear students? Okay, next step is write profit sharing ratio. Okay, then we divide adjusted capital by this PSR, we get capital per unit of PSR. क्या करेंगे हम लोग? 2,74,000 डिवाइड बाय 6, 6 शेयर के लिए इसने 2,74,000 लाया है, मतलब पर शेयर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 45,667। समझे? तो ऐसे ही बाकी लोग का भी निकालेंगे हम लोग। क्लियर? सेम। सो 172 डिवाइड बाय 3, तो इसने पर शेयर के लिए कितना लेके आया है? मैं इसका पॉइंट्स निकाल देता हूँ, डेसिमल पॉइंट्स, आई विल राउंड इट ऑफ। हाँ, सो सेकेंड पार्टनर बी हैज ब्रॉट फॉर वन शेयर 57,333, तो 3 शेयर के लिए मिलके उसका 172 आ रहा है। तो सेम वी विल डू इट फॉर सी, तो उसने एक शेयर के लिए 1,04,000 ही लाया है, बराबर ना?
तो इसका ज्यादा है 1,04,000 पर शेयर, बाकी दोनों का पर शेयर देखो छोटा है। ओके, तो जिसका पर कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर सबसे छोटा है उसको बेस पकड़ने का। ओके, मेक इट अ बॉक्स अराउंड इट और सर्कल अराउंड इट। ओके, बिकॉज दैट अमाउंट विल बी टेकन एज बेस। ओके, तो जिसका सबसे कम पर कैपिटल है उसको हम लोग बेस लेंगे। ओके, और उसके हिसाब से सबका कैपिटल कितना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितना है सबका, दैट वी विल फाइंड आउट। क्लियर? So we are taking A's capital which is least among these three as base capital। बराबर? तो ए का कैपिटल कितना है 45,667 फॉर वन शेयर। तो उसका शेयर के लिए कितना हो जाएगा, तो 45,667 इंटू 6, तो हम लोग को फिर से उसका ओरिजिनल कैपिटल आएगा। जिसका पर यूनिट हम लोग को बेस मिलता है ना लोएस्ट, उसका एडजस्टेड कैपिटल और रिक्वायर्ड कैपिटल सेम हो जाएगा, याद रखो ये। समझ गए? क्लियर? सो अभी बी का निकालते हैं। अगर बी ने 45,667 के हिसाब से पैसा लाया होता तो उसका 3 शेयर के लिए कितना होता था? अगर आप जब अपने बेस बनाते हो ना, ये 45 बेस निकाला ना सबसे लिस्ट, उससे पीएसआर को मल्टीप्लाई करेगा और अपने अपने कॉलम में उसको अमाउंट लिखना है। हाँ, तो आई एम मल्टीप्लाइंग 45,667 विथ बीज शेयर्स। सेम वे आई डू इट फॉर सी, 45,667 into his shares are only one, isn't it? Okay, so this gives us required capital। okay, ए का पर यूनिट कैपिटल सबसे लो था, इससे उसको हमने बेस पकड़ा। उसके हिसाब से बाकी लोग को कितना कैपिटल जरूरत है दैट वी फाउंड आउट। वो कैसे करना है, देखो हम लोग को जो एडजस्टेड कैपिटल मिला था बराबर, उसका नेक्स्ट लाइन में हमने पीएसआर लिखा। अभी उसके नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, आपको डिवीजन करना है, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर हर एक का। हाँ, हर एक का ऐसा करना है। तो हम लोग को क्या मिलता है, कैपिटल पर यूनिट तीनों का। तो इन तीनों में से जिसका लीस्ट है, जिसका सबसे कम है, उसको बेस पकड़ने का। ओके, तो अभी इस बेस से ऊपर के पीएसआर को मल्टीप्लाई करने का, हर एक कॉलम में उसका उसका वैल्यू लिखने का। तो 45 इंटू 6 वी गॉट 274, 45 इंटू 3 वी गॉट 137, 45 इंटू 1 वी गॉट 45,667। समझे? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड कैपिटल। सब लोग का कैपिटल एक ही हिसाब से इतना होना चाहिए था। क्लियर? तो अभी अपने को समझिएगा किसका कैपिटल ज्यादा है। तो रिक्वायर्ड कैपिटल ए का है 274,000 और उसका एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल है 274,000, सो देर इज नो एक्सेस। क्लियर? सेम वी विल कंपेयर इट फॉर ए एंड बी। क्लियर? एक मिनट, एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिक्वायर्ड कैपिटल। ओके, सो बी का 35,000 एक्सेस है और सी का 58,333 एक्सेस है। विल कॉल दिस एज इनिशियल सरप्लस। ओके, तो एक स्टेप होने के बाद एक जन बाहर हो जाएगा, मतलब ए का लिस्ट कैपिटल सबसे कम था, तो उसको पहला पेमेंट जाने वाला ही नहीं। अभी की कौन कौन लाइन में बचा है, बी और सी। बराबर? अब जो हमने 3 स्टेप्स किए ना, 3 लाइन का एक फेज था, वो रिपीट करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग पीएसआर का रिपीट करेंगे। ओके, ओके, विल रिपीट पीएसआर। ओके, सेम प्रोसीजर। देन वी डिवाइडेड, बराबर डिवीजन होगा। अभी इसका ए तो निकल गया तो ए का लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अभी कैपिटल पर यूनिट कैसे निकालते हैं हमने, कैपिटल डिवाइड बाय ही शेयर 3। सेम वैसे हम लोग को ए सी का भी करना है। ओके, 58,333 डिवाइड बाय 1। ओके, मैं इनका वापस से डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ। नाउ अगेन वी विल कंपेयर किसका पर यूनिट ऑफ कैपिटल सबसे लीस्ट है। ओके, ए तो निकल ही गए बाहर, उसको लाइन में सबसे लास्ट में ढकल दिया। ओके, अभी बचे बी और सी। नाउ विल सी कौन ज्यादा कैपिटल लाए। ओके, फॉर दैट अगेन वी हैव टू रिपीट द प्रोसीजर, राइट पीएसआर बराबर ऑफ बी एंड सी ओनली, देन डिवाइड द रिमेनिंग कैपिटल, जो अभी एक्सेस है ना उसको ही डिवाइड करना। ओके, फॉर बी एंड सी, सो 35 डिवाइड बाई 3, तो उसने पर शेयर के लिए 11,667 लाया। सेम वे सी का कितना है, 58 बचा एक्सेस, उसका एक शेयर का ही है। ओके, नाउ हुज कैपिटल पर यूनिट इज लिस्ट फॉर बी, बराबर बी का कम है। तो नाउ अगेन विल कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपिटल टेकिंग बीस कैपिटल एज बेस। तो हम लोग क्या किए थे, जो बेस कैपिटल आया लिस्ट उससे पीएसआर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो 11,667 इंटू 3।
ओके, सेम वे अगेन सी में 11667 इंटू उसका शेयर सिर्फ एक है, बराबर ना, वाई। क्लियर। अब हम लोग फिर से वही करेंगे, लेस करेंगे। ओके, बी का कैपिटल अभी पड़ा है 35 और उसका रिक्वायर्ड भी है 35, बराबर। तो देर इज नो एक्सेस फॉर बी नाउ, समझ गए। अब सी का कितना एक्सेस है अल्टीमेटली, 58,333 था और उसका रिक्वायर्ड था 11,667, तो उसका अभी भी 46,667 एक्सेस है। ओके, इतना करने के लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे। ओके, नॉट डिफिकल्ट, इवन इफ दिस इज फॉर 20 मार्क्स, दिस विल मिनिमम गिव यू 10 मार्क्स। ओके, एंड ये जो प्रोसीजर हमने किए है उसमें जो लास्ट का 2 लाइन है, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ये 2 लाइन। दिस इज गिविंग यू, एक मिनट इसके जीरो का डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ उसमें से। ओके, तो दीज 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ सबसे पहले किसको पे करना है, पे सी, आई राइट हियर, पे मिस्टर सी, हाउ मच, 46,667। तो सबसे पहले पैसा बचा तो मिस्टर सी को जाएगा। ओके, ओके, सो दिस लास्ट लाइन गेव अस दिस स्टेटमेंट। हाँ, लास्ट लाइन ने अपने को ये स्टेटमेंट दिया फर्स्ट वाला, और सेकंड स्टेटमेंट के लिए सेकंड लास्ट लाइन लिखना है, समझ गए। वो लाइन आएगा आपका, पे रुपीज 35,000 एंड रुपीज 11,667 टू बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, समझ गए। तो पहले सी को एकदम एक्सेस था वो दे दिया 46, तो बोला अरे वाह चलो 46 आ गया। अब जो बचेगा उसमें ये दोनों का नंबर लगेगा, सेकंड लास्ट लाइन। ओके, उसके बाद तीनों को मिल जाएगा, पे ऑल इन पी एस आर। ओके, तो दिस स्टेटमेंट विल गिव यू 10 मार्क्स। और ये जो 3 लाइन है ना, हम लोग को जब ए बी सी का कैपिटल रिपे करना है तो ये ऑर्डर में करना है। ओके, टोटल 6 कॉलम, कितना, 5 कॉलम है, तो उसमें से 3 कॉलम इस टेबल पे ही डिपेंड करते हैं। समझ गए। तो ये टेबल आपको ना सिर्फ इसके खुद के 10 मार्क्स दिलाएगा, प्लस अगले टेबल में ये आधे मार्क्स भी दिलाएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज राइट क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके, तो इस चैप्टर के अगर 2 सम आ गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। ओके, नाउ अभी सेकंड टेबल। ओके, उसमें क्या क्या कॉलम रहेंगे, फर्स्ट पर्टिकुलर सा कॉलम होगा। ओके, सेकंड हमेशा कोई कोई टोटल लाइबिलिटी का कॉलम बनाता है, वो कुछ जरूरत नहीं उसकी। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, जो मैं कॉलम बना रहा हूँ उतने बनाओ। ओके, सो कैश रहेगा और बचे हुए कॉलम जितनी लाइबिलिटी है उतने कॉलम बनेंगे। ओके, हाँ, तो मैंने तुम लोग को ऑर्डर बताया था, बराबर। व्हाट इज द ऑर्डर, पहले सिक्योर्ड लोन्स अपना, एक मिनट सिक्योर्ड, एक मिनट मैं जरा क्वेश्चन हटाता हूँ, तुम लोग को दिखेगा। हाँ, लुक एट दिस, ऑर्डर ऑफ पेइंग लायबिलिटीज, फर्स्ट रिलेशनशिप, इसके लिए हम लोग को कॉलम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इसके लिए अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, जैसे कि एम्प्लॉयज ड्यूज, हाँ हमारे समय एम्प्लॉयज ड्यूज है, बराबर। तो कैश के बाद आई जस्ट इंसर्ट वन मोर कॉलम, एम्प्लॉयज ड्यूज, आई राइट एम्प्लॉयज ड्यूज। वर्कर्स का कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट का कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, दे विल गेट प्रायोरिटी। ओके, तो उसका कैश के बाजू में पहले कॉलम आएगा, समझ गए। कोई बैंक लोन लिखा है, अगर लिखा है सिक्योर्ड, तो इसके बाद उसका कॉलम आएगा, समझ गए। उसके बाद अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा और बिल्स पेबल आएगा। सो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे, बिल्स पेबल। ओके, फिर बाद में क्या बचा है, हो गए। जनरल रिजर्व तो वी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, सो इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली। ओके ना, so you don't need to write general reserve separately, it is part of your capital now, समझ गए। okay, I'll just again shift this sum। okay, now we'll write their balances। कैश का बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में देखो 10,000, तो राइट 10,000। ओके, एम्प्लॉइज ड्यूज कितना है 10,000, राइट 10,000।
क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है? 2,34,000। ओके। बिल्स पेबल 1,56,000। ओके। देन कैपिटल, while writing capital always remember write adjusted capital, क्योंकि हमने जनरल रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट रहता है उसके लिए अलग से कॉलम नहीं बनाते, उसके बजाय कैपिटल में हम लोग उसको एडजस्ट कर लिए ना पहले, तो नाउ दिस कैपिटल विल इंक्लूड दिस वैल्यूज। ओके, रिजर्व्स हो, पीएनएल हो, सो उसके लिए कॉलम अभी बनाने की जरूरत नहीं। व्हाट यू नीड टू डू इज राइट एडजस्टेड कैपिटल, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, डोंट मेक मिस्टेक हियर। कैपिटल कौन सा लोगे? जो एडजस्टेड कैपिटल है एडिंग रिजर्व्स के बाद वो वाला, 1,72,000 और 1,04,000। ओके, आर यू क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ऑल द बैलेंसेस। ओके, इसके आपको 10 मार्क मिल गए देखो। ओके, और यहाँ पर भी काम आने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल इन पेपर यू मे एक्सपेक्ट वन स्मॉल सम ऑन दिस excess capital statement only. If it is a full-fledged sum, it will be having 20 marks. So 10 marks minimum for this statement and 10 marks for this. Again, at least 3 items will depend on earlier statement. समझ गए? So first of all, you will write opening balances. Now, the common mistake which students make is they forget the realization expenses, dissolution expenses. Okay. Now we use the balance sheet. Now go below the balance sheet. What is given to you? The asset realized. देखो मैंने बोला था क्या आपको एडजस्टमेंट रहेगा? फर्स्ट दे विल टेल यू हाउ मच कैश यू रियलाइज डे वाइज, डेट वाइज, और दे विल जस्ट नंबर इट 1 2 3। ओके, वो दिया है आपको। दूसरा एडजस्टमेंट होता है हमेशा डिसोल्यूशन एक्सपेंस का, एस्टिमेटेड और एक्चुअल दो वैल्यू दे रहेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को वो पैसा माइनस करना है। देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में मैंने बताया ना, फर्स्ट किसके लिए पैसा बाजू में करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑल्सो कॉल्ड एज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्लियर? समझ गए? ओके, सो रिफर टू द सेकंड एडजस्टमेंट। व्हाट इट सेज, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर एट एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 7,000। ओके, तो अभी हम लोग को बाजू में कितना करना है? 7,000 बाजू में करना है। किसके लिए? एस्टिमेटेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो वी कैन से नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली 3,000। डायरेक्ट एम्प्लॉयज को देने को मत जाना, सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। समझ गए ना? जो असेट बेचने का काम है उसमें ये खर्चे होने वाले छोटे मोटे। हाँ, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, फॉर्मेट लिखते पहले इस आइटम को लिखना। ओके, अमाउंट केप्ट असाइड फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, इंपॉर्टेंट है। कितना बोला है? 7,000 एस्टिमेट। दो अमाउंट दिए ना, एक्चुअल दिया है 5,000 सेम लाइन में देखो, और एस्टिमेटेड कितना है? 7,000। बराबर, सो यू हैव टू राइट 7,000, डोंट राइट 5,000। ओके, अभी तो अपने सम स्टार्ट किया ना, तो अभी एस्टिमेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट लाइन ही गलत हो जाता है, आगे वाला सब कुछ गलत है, पूरा 10 मार्क गायब। क्लियर? so be careful with this second adjustment. Okay, maybe given third most of the time. So first remove or keep aside amount for dissolution expenses. Which figure you will take? Estimated expense only. Is this clear? Now how much cash is available now? 3,000. Okay, now we will go as per the order. First of all we have to pay employees dues, but now cash is available. I'll just change this, less employees dues. How much cash is available? Only 3,000. So we can pay only to the extent of 3,000. तो कैश में से 3,000 गया तो बचेगा 0। ओके, और जिस लाइन में लेस लिखा है ना, उसी लाइन में एम्प्लॉइज ड्यूज में लिख देना लेस 3,000। और एम्प्लॉइज ड्यूज कितना बचा है अभी भी? 7,000। आर यू क्लियर? ओके, सो अभी अपने पास कैश 0 है, एम्प्लॉइज ड्यूज और बाकी तो आगे वाले सारे पेंडिंग है। ओके, बट टेक वन लाइबिलिटी एट ए टाइम। ओके, वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी एट ए टाइम। हाँ, तो बाकी लोग को अभी खींचना मत नीचे, जैसे जैसे एक एक सेक्शन होगा वैसे वैसे लेते जाना। ओके, नाउ they have given first realization on 30th April. I'll just change the date, 30th April,
Okay, how much cash we realized? 1,40,000. Clear? So amount realized is 1,40,000. Clear? So this much amount is available with us. 1,40,000. Clear? To whom shall we pay first? Realization expenses. बराबर ना? अपना एम्प्लॉइज ड्यूज, हाँ, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन बाकी है ना, तो पहले उसको पे कर देना। कितना पे करना है? 7,000। जितना कैश पे करोगे उतना कैश में से माइनस करना है, आपको याद रखना। ओके, और सेम लाइन में जिसको पे करे उसको पे करना है। ओके ना? कोई कोई मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर 1,40,000 है, उधर ही 7 लिख देते हैं। यू विल लूज मार्क्स। ओके, डोंट डू दैट। जहां पर हमने लेस लिखा है ना, उसी लाइन में कैश में भी लिखना है, उसी लाइन में एम्प्लॉइज ड्यूज या जो भी लाइबिलिटी पे किया है वहां पर लिखना है। तो एम्प्लॉइज ड्यूज अभी 0 हो गया। कैश कितना बचेगा? 1,33,000। समझ गए? क्लियर? अब नेक्स्ट कौन सी लाइबिलिटी आ रही? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, दे बिलोंग टू सेम, इजंट इट? वो दोनों अनसिक्योर्ड है बराबर, क्योंकि उधर सिक्योर्ड ऐसा लिखा नहीं किसके बाजू में, तो बोथ आर अनसिक्योर्ड बाय डिफॉल्ट। सो विल कैरी फॉर दैट 2,34,000 and 1,56,000। ओके, नाउ विल पे देम। अब देखो हमारे पास कितना है कैश? 133। एंड हाउ मच इज द लायबिलिटी? मोर देन 3 लाख, या अराउंड 4 लाख के आसपास है। बराबर? बराबर, तो अपने पास इतना कैश है नहीं, बराबर ना? सो व्हाट आई टोल्ड यू, हाउ टू पे देम? इन देयर प्रपोर्शन। ओके, जैसे हमने पीएसआर का प्रपोर्शन देखा ना, वैसे इन दोनों का भी प्रपोर्शन देखना है अपने को। शैल वी डू इट हियर? ओके, आई डू इट। ओके, two liabilities are, one is creditor, second is bills payable. Okay, write their amount 2,34,000। 3 0 कट कर देता हूँ तो 234, और 156,000 का 156। ओके, और कम कर सकते हो, लेकिन उतना करते मत बैठना, टाइम पास मत करना। जो भी बड़ा फिगर है उससे लेके चलो। सिर्फ कॉमन जीरो जितना है, दोनों में 3 3 0 कॉमन थे ना, तो 3 0 कम कर दिए। ओके, तो इन दोनों को ऐड करो। हाँ, सो दिस इज 390। जैसे हमने यहाँ पर पीएसआर निकाला था ना, पीएसआर जैसे किया था 6:3:1, और टोटल 10 किया था, वैसे ही टोटल यहाँ पर 390 आ गया। क्लियर? ना हाउ विल गिव इट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल? कैसे देंगे हम लोग? क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? कैश अवेलेबल कितना है? फर्स्ट एक कैश अवेलेबल है 133,000, इन टू क्रेडिटर्स को कितना देना है? 234 आउट ऑफ 390। आर यू गेटिंग दिस? समझे? ये किसका आएगा वैल्यू? क्रेडिटर्स का। प्लीज कैलकुलेट एंड गिव इट टू मी इन योर चैट। और बिल्स पेबल को कितना मिलेगा पेमेंट? कैश में से कैश कम है ना, 133 है, इनटू उसका शेयर कितने हैं? 156 आउट ऑफ टोटल इज 390। उन दोनों का टोटल है 390। क्लियर? सो डू दिस एंड गेट द अमाउंट। एंड डू क्लियर 1,33,000 इंटू 234 डिवाइड बाई 390। आर यू गेटिंग इट? 79,800। ये किसको जाएगा? क्रेडिटर्स को। हाँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ, पेड टू creditors and bills. Okay, in ratio. Okay, mention that. हाँ, कितना अमाउंट जाएगा? कैश पूरा हम लोग बांट रहे हैं ना, 133,000। ओके, हाँ, सो तो इसका आ गया 79,800। ओके, वैसे दूसरे का निकालो। यू कैन डू लाइक 133,000 माइनस 79,800। ओके, बचा हुआ उसका रहेगा। ओके, क्लियर? तो ये माइनस करते विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम देयर लायबिलिटी। क्रेडिटर्स का टोटल था 234, उसमें से पे किया, बिकॉज वी हैड इनसफिशिएंट कैश ना, तो जितना प्रपोर्शन में पॉसिबल था उतना हमने दे दिया उनको। तो स्टिल वी हैव देयर बैलेंस एज 154,200 एंड 102
800. Is this clear, students? यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, अभी आगे जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट रियलाइजेशन 31st मई को आ रहा है ना, विल राइट हियर एंड realization on 31st May. ओके, कितना पैसा आ गया 31st में? 3,60,000. 3,60,000. ओके, अभी विल सी हाउ मच इज द टोटल ऑफ दिस टू लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल आ रहा है 2,57,000. बराबर. सो वी कैन इजीली पे देम ऑफ. कम है ना दोनों का मिलके. बराबर. सो विल पे देम. सो लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन फुल. अभी हम लोग पूरा दे रहे हैं उनको. हाँ, उन दोनों का टोटल कितना था हमने देखा? 2,57,000. सो 2,57,000 हमारा कैश में से कम हो जाएगा एंड विल बी पेइंग देम फुल. ओके, तो these two will become zero. Cash will be left with us. कितना अमाउंट बचेगा? 360 minus. So 1,03,000 is the cash left with us. समझ गए? Are you getting this, students? Now, all the liabilities are done. Yes. Now we have to go as per the statement of excess capital. Excess capital का statement के हिसाब से now we have to pay. Okay. अब सबसे पहले किसका नंबर आएगा? Look at the order of payment. ये देखो order of payment दिया. You have to pay in that order. First we'll pay to whom? Mr. C. So right. Pay Mr. C first. बराबर. So how much is to be paid? 46,667. 46,667. Okay. Mr. C को कितना जाएगा? Okay, we can carry forward those balances. नीचे लाइन में हम लोग को जहां पर ये जीरो हो जाते हैं उसके बाजू में उनका कैरी फॉरवर्ड करो. ओके, हाँ. सो नाउ फर्स्ट विल पे not to A, not to B, but to C. 46,667. Clear? Now from cash, this much amount will be reduced. Okay. कैश कितना बचा? 56,333. और बाकी लोग का लायबिलिटी देखते कितना बच रहा है. ओके, सेम वे ए का बी का उतना ही बचेगा. सी को पेमेंट हो गया तो उसका 57,333 बचा है. ओके, समझ गए? आर यू गेटिंग दिस? हाँ. ना हाउ मच वी हैव? 56,333. ओके, कुछ लोग नेट की वजह से बाहर गए थे, वापस ज्वाइन किया उन्होंने. ओके, तो आफ्टर पेइंग द आउटसाइड लायबिलिटीज व्हाट वी डिड, we still had 1,03,000 left with us. Okay na? So what we did, we followed the order of payment given in excess capital statement. Okay, therein given that pay Mr. C 46,667 first. तो हमने उसको पहले पेमेंट कर दिया. ओके, तो भी माइनस करके सबका बैलेंस दिख रहा है हम लोग को. क्लियर? नाउ अभी वी हैव टू फॉलो द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट. इट सेज pay 35,000 to B and 11,667 to C. Okay, so इन दोनों का एडिशन अगर 56 से कम है then we have sufficient cash. Let us check how much we have. 35,000 we have to pay to B and 11,667 to C. 46. Yes, we have sufficient cash, so we can pay both of them, right? Chalo, let us pay them less paid to B and C. Okay. So total, how much is the balance? 46,667 is the total amount payable to them as per order number 2. So B को जा रहा है उसमें से 35,000 and C को जा रहा है 11,667.
I'll tell you how to cross verify whether your answer is correct or not. Okay, I'll teach you. एक लाइन है लास्ट में, वो हम लोग को बताएगा कि आपका आंसर बराबर है कि रॉन्ग है. ओके ना, यहाँ तक सॉल्व किया है तो क्लियर. यहाँ तक तो आप 15 मार्क्स तक आ गई हो. मिनिमम 15 मार्क्स you'll get till this stage. If you solve till this stage, you'll get at least 15 marks. Okay, चलो. Now let us see how much cash is left with us. 56,333 minus 46 we paid. Okay, same way let us see how much is balance with ABC. ओके, ये तो कुछ नहीं दिया था बराबर ना, तो उसका पूरा बैलेंस बचा है. बी को थोड़ा मिला है, सी को मिला है, तो उनका भी पेंडिंग है. समझ गए. और अभी कैश कितना पड़ा अपने पास, 9,666. ओके, अभी तो हमारा दो ही रिलेशन हो गया बराबर ना. एक 140 वाला बराबर, उसको बोल्ड करता हूँ मैं, और बाद में 360 वाला. ओके, अब छोटा सा अमाउंट है 9,666. तो हम लोग का दो ऑर्डर हो गया पेमेंट बराबर, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया बराबर ना. अब थर्ड ऑर्डर पेमेंट क्या है, पे ऑल इन PSR. तो ये 9,666 है, तीनों को देने का है PSR में. सो आई राइट हियर लेस पे ऑल इन PSR. समझ गए. तो PSR क्या है अपना, 6:3:1, मतलब 6/10, 3/10 और 1/10. और हम लोग को ये पूरा अमाउंट देना है. ओके, तो माइनस ये फुल अमाउंट हो जाएगा, तो क्या है, जीरो बचेगा अपने पास. समझ गए. अभी ये जिस लाइन में आप लेस लिखते हो ना, उसी लाइन में आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको. ओके, सो हाउ मच ए विल गेट, 9,666 इंटू ही शेयर्स आर 6/10. क्लियर, उसका वैल्यू आ गया. सेम वे फॉर बी, आउट ऑफ 9,666 ही हैज 3 शेयर्स आउट ऑफ 10 बराबर. व्हाट अबाउट लास्ट सी, again he'll get from 9,666 how many shares he has, 1 out of 10. ओके, अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू 9,666 ही दिखेगा. देखो नीचे दिख रहा है बराबर, टोटल. समझ गए ना. तो अपना कैश हो गया जीरो. लेट अस सी हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट विद देम. तो कैश बिकम जीरो, 9,666 minus 9,666. Okay, same way let us do it for ABC. ओके, इतना कैश अभी भी, इतना बैलेंस उनका अभी भी पेएबल है बराबर, ABC का. अब क्या करेंगे, विल टेक नेक्स्ट रियलाइजेशन. विल राइट एड थर्ड रियलाइजेशन, दैट इज ऑन 30th June. हाउ मच कैश वी गॉट, 1,94,000. 1,94,000. जिस लाइन में कैश आया लिखा उसी में जाके डिस्ट्रीब्यूट मत करना. ओके, उसके नीचे के लाइन में लिखना लेस पेड टू ऑल इन PSR. कितना दोगे, फुल 194,000 बराबर ना. अभी और कोई बाहर वाला है नहीं, तो पूरा उसको ही जाएगा. तो कैश बैलेंस तुम्हारा जीरो बचेगा. और जिस लाइन में लिखा है ना पे टू ऑल, उसी लाइन में जाके फिर से वही कैलकुलेशन करना है. कितना अमाउंट बांटना है अपने को, 194. जितना बांटना है वो सबसे पहले स्टार्टिंग लेना, 194,000 इंटू जिसके कॉलम में उसका शेयर 6 है आउट ऑफ 10. समझ गए. ओके, तो सेम वैसी बी का, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 194,000 into his shares are 3 out of 10. Then last one, we have to distribute 194,000 into 1 divided by 10. हाँ, तो इनका भी वैल्यू आ गया. ओके, लेट अस फाइंड हाउ मच इज द बैलेंस लेफ्ट फॉर लास्ट एडजस्टमेंट. इनका अभी भी अमाउंट पेंडिंग है, 151,800, 75,900 और 25,299. क्लियर. Now again we'll take last realization. How much? 31st July. So you'll write realization on 30th July. Clear? How much is the amount? 1,80,000. 1,80,000. Now see, whenever you will get paper, okay, what adjustment you have to do, I'll tell you now. जो आपका लास्ट रियलाइजेशन है लास्ट वाला, उधर एक स्टार मार्क करके रखना कभी भी. क्यों,
सी वी हैड केप्ट असाइड 7,000, बराबर, एकदम फर्स्ट लाइन में ऊपर सेकंड टेबल में. हाउ मच अमाउंट वी केप्ट असाइड 7,000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस. और उसका एक्चुअल खर्चा कितना है बोला आपने को, वी स्पेंड 5,000, मतलब उसका 2,000 जो बाकी था ना, वो अभी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा. क्लियर. सो हाउ मच कैश वी हैव नाउ, just I will extend the format by 2-3 lines. So total cash available is 1,82,000. So we don't have to just distribute 180 plus 182, क्योंकि वो 2,000 जो बाजू में रखा था, एक्सेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट केप्ट साइड, इतने लिखते हैं, अमाउंट केप्ट. ओके, तो वो ऐड कर दिया. तो अभी अपने पास 182,000 कैश है. नाउ वी विल अगेन गिव दिस टू ऑल इन PSR. सो अगेन कॉपी दिस, पेड टू ऑल इन PSR. हाँ, तो इस लाइन में ही लिखना कितना देने वाले, पूरा का पूरा 182. तो आपका कैश कितना बचने वाला है, 0. ओके. चलो अभी 182 सबको बांट देते हैं हम लोग. तो इसको कितना मिलेगा, 182,000 इंटू ही शेयर्स आर 6/10. बाजू वाला we have to distribute 182,000 into 3/10. Then last one again 182,000 into 1/10. Clear? So now let us see what is the balance left at the end. अब एक लाइन इंपॉर्टेंट बताऊंगा तुम लोग को मैं. ओके, 151 देना था लेकिन दे पाए 109, बराबर. सेम इज विथ द रिमेनिंग 2. So this is called as loss on dissolution. समझ गए. ओके. अब चेक कैसे करोगे का सही है कि रॉन्ग है. तो ये जो लास्ट लाइन है आपका PSR में ही होना चाहिए. अगर ये आपका PSR में है मतलब आपका सम बराबर है. ओके. तो 7,099 इंटू 6 करके देखो. 7,099 इंटू ये 1 शेयर है ना, तो इंटू 6 करो तो फर्स्ट वाले का अमाउंट मिलेगा 42,596. यस, इट इज करेक्ट. हाँ, 10 रुपया प्लस माइनस चलेगा आपका आंसर. समझ गया ना. 3 शेयर है बी का, तो कितना करोगे, 7,099 इंटू 3, 21,290, मतलब 300 है. क्लियर. आर यू गेटिंग इट. हाँ, जस्ट टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड दिस. वेरी इंपॉर्टेंट सम. ओके, सिंपल सम आने वाला है. ओके, अभी आपको थोड़ा वैरायटी क्या है मैं बताता हूँ. समझ गए ना, इसमें क्या वैरायटी आ सकती है. ओके, प्लीज टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड दिस. एक दो सम तुम लोग को ओरली फटाफट करा देता हूँ. ओके, so that we will save time. So we can cover more variety in less time. यहाँ पर देखो. New question is there. अच्छा, you want to teach me that third adjustment again. थर्ड एडजस्टमेंट. हाँ. अरे एक बाकी रह गया. विल हैव वन मोर एडजस्टमेंट. एक एडजस्टमेंट है वो भी हम लोग कर लेते हैं. एक लाइन में इधर इंसर्ट करता हूँ. जस्ट अ मिनट. थोड़ा में देखा नहीं, एक मिनट मैं इसको जस्ट होल्ड ऑन. लेट मी टेक अ कॉल.
Okay, students, just received one call. Okay, so we are back. Yeah, I was telling, let me just insert one line here. Let me take a call again. Give me a minute. Okay. Ah, okay, students, sorry for that. Okay. So third adjustment is there on 31st July. Okay, on same day, uh, Mr. A took over stock worth rupees 20,000. Okay, so this is considered as a next realization. So we'll write add realization on 31st July in the bracket asset taken over. Okay, so there is no special treatment. Just consider as if you have received cash. How much? 20,000. Okay, more lines I'll add. Okay, no special treatment, just similar to amount realized is to be made. Same treatment. So again, less paid to all in PSR. Okay, how much? 20,000. So cash balance left 0. Okay, now distribute 20,000 same way. Okay, this loss on relation will come down now. Okay, so do the calculation again. Plus 20,000 into 6 by 10. You'll get 12. Okay, he'll get 6 and he'll get 2. Okay,
So now loss on relation will be 42,600 minus 12,000. Okay. So this is your loss on relation. So no special treatment for assets taken over. Even if asset is taken over by any partner, okay, treat it as amount realized from that partner, okay, and distribute amongst all the partners. Clear? Is this clear, students? Acha, one student is asking how we got that 2,000 rupees as excess. Okay, for that you have to refer to second adjustment. In second adjustment, we are told that dissolution expenses expected are 7,000. Okay, but actually only 5,000 were spent. So at the beginning of this second statement, look, we kept aside 3,000. Okay, okay, but actually we spent only 5,000. So in the last relation, you have to add that 2,000. Okay, which was excess. Okay, which was kept aside but was found excess. So we can add to that last installment. Okay, is this clear, students? Type yes if you have got that adjustment. Anushri. Okay. Now we'll go to other sums. I'll teach you quickly 2, 3 more sums. Okay. If anything is new is there, you will learn something new. Okay. Okay. Now I come to next sheet. See here one sum is there. Okay. Now again look at the liability side. Creditors are there. Bank loan, see secured bank loan is there. Loan from A, then capital of ABC is given to us. Clear? On the asset side, we have building, plant, stock. We are least bothered about assets. Only cash is important to us. Clear? So cash is not given to us, isn't it? So while writing balance, you will write cash as 0. Clear? Now which liability will be paid first? Bank loan is secured. So its column will come first. Clear? Then unsecured, that is creditors, then loan from partner, okay, and then partners capital. Clear? This order should be maintained. Okay, first pay outsiders, then if at all partners loan is there, pay partners loans, okay, and then partners capital. Again you have to make this statement of excess capital. How you will do it? First you will write all the opening balances, see the sum 70, 30, 50. Then you will write PSR. Okay, then we divide. Reserves are not there, otherwise we would have added to opening balance. Reserves are not given to us. Clear? Hmm. Okay, one new change is there. You can look at the realizations at the bottom. Okay, on May 20th, you have realized 22,000 and they have said 2,000 were paid. So what you will do while taking realization, take the net amount 22 minus 2. Okay, is this clear? Same way, July 16,800 minus 1,800. Clear? So 15,000 is the net. Clear? Okay, so that's it. I'll go to next sum, one more sum. We'll just orally check if anything new is there. Okay, this looks little different. Just give me a minute. I'll just increase the column size. Yes, madam.
Okay, students, sorry for that break. Okay. Okay. Some students are telling me start with final account. Yes, yes. Give me 2 minutes and just see if any variety is there to show you so that you don't miss out marks on these sums. Okay. So this is another sum. Let me check. Uh, Capitals are given, creditors. Okay, only one liability is there. So after cash, creditors will come and then partners will come. Okay. On the asset side, okay. On the asset side, you can see a change is there. Cash on hand will be your cash balance. Data, stock, franchise machinery, we are not bothered. But current accounts are given. Okay. This is something new for you. Now, when they give current accounts, it means amount is payable to them, or sorry, recoverable to them. On the liability, amount is payable to them. So what we can do in statement of excess capital, first write their credit balance 40, 30, 27, then reduce current account. This means these are the drawings. Current account on the asset side indicates drawings. So just subtract it. Okay, less current account. Okay, then add general reserve. If at all are there, then add general reserve. Clear? Then you'll get adjusted capital and then follow the same step PSR. Okay, then capital per unit of PSR, then base capital. Okay, then follow the same steps. Is this clear, students? Okay, there was a new thing in this sum. Okay, let me see if any other variety is there. Okay, look here, one more variety is there in here. I should increase the size. See, they have told us that assets realized as follows. Then they have given on Jan data stock realized 12,000 and 6,000. So you add these two. Total is 18,000 minus expense 1,000. So you take 17,000 as amount realized. Are you getting this? Clear? So this is also a change which may come. Okay. Rest in balance sheet we can see creditors loan from A, that is partner's loan, general reserve is given. So in statement of excess capital, you start with opening balance, you will add reserves. Okay. On the asset side, nothing is there, so need not minus anything. Then follow the same format. Okay. In main table, you will make cash column first, then creditors column, then loan from A, then capitals ABC. Okay. And pay them as per the order of payment. Okay. Yeah, that's it, I think. Okay, now we'll go to final accounts. You are there now? Okay, we'll start with final accounts now. Just give me 2 minutes break. I'll get the water. Give me 2 minutes. I'll just go to staff room and fetch some water for me. 2 minutes.
Okay, students. Okay, back. Okay, so we want to final accounts. Final accounts is just normal final accounts which you have been studying. तो इधर क्लास है हाँ ले लो, ज्यादा बच्चे हैं क्या? नहीं सर ज्यादा नहीं ओके आ जाओ वो टीचर वालों को बुला okay, so what will be given to you in the sum? Light on कर दो. Okay, so in final account sums, what will be given to you? Trial balance, some adjustments as usual, but new thing will be these final accounts will include adjustments on admission or retirement or death of a part. Clear? So there will be a little change. This won't be very similar to your normal final accounts. What is the change then? In trading account, there is no much change. Even in partners capital balance sheet, there is no change. But a possible change is there in your P&L account. Okay. Now, a partner may be admitted. Okay. Either on day one. Okay. I'll just explain in detail. A partner may be added on day one. Okay. That is 1st April, suppose, or 1st January, whatever. Suppose it is admitted on 1st January 2023. Okay. Then he will get share in entire year's profit, isn't it? He is there since day one, so he'll get share in entire year's profit. If he joins on last day of the year, he joins on the last day of the year, 31st December 2023. Suppose he joins on last day of the year. He will not get any share, zero, nothing. He will get nothing, okay? Because he joined on the last day, okay? So in these two cases, there is no problem at all, okay? But if partner joins somewhere in between, okay? Say for example, after 3 months, okay? Joins after 3 months, what will happen? He will claim share in remaining 9 months profit, isn't it? If he joins after 3 months, means for first 3 months he was not there. So he will not get share in profits of first 3 months, isn't it? So no profit. But he will get share in remaining 9 months profit. He gets share. Isn't it? Okay. So a problem will arise only if partner, a new partner is admitted, dies or retires in between any days of the year. Okay. For calculation purpose, we keep it either uh, after 3 months, 6 months, or 9 months. Here, we don't give any odd. This is clear. So, what is the change? Due to this, we have to divide our profit into pre-admission or post-admission, or pre-retirement, post-retirement, like that. Clear? So therefore, we have to make two columns in our P&L account. Okay. If it is admission, then pre-admission, post-admission. Okay. If he is retiring, pre-retirement and post-retirement. Okay. Pre-death, post-death, like that. Clear? So change is there only in P&L account. Clear? Okay. A very rare possibility is there that there will be two columns, pre and post in trading account. But that is a rare possibility. It is also not difficult, it is simple only. They will give you opening and closing for all the periods, pre as well as post. Because here in trading account, we need
opening stock, closing stock of both the periods. Then purchase, sales separately for both the periods. That will be given to you. Okay, so that will be just time consuming, nothing else. It won't be difficult, but you will be tested in P&L account. Okay, because in P&L account they will provide only common expenses, and you have to distribute those or divide those expenses between these two parts: pre-admission, post-admission, or pre-retirement and post-retirement. Are you getting this, students? Just type yes in chat box once, so I'll understand you are understanding this. Okay, so shall we take a sum? That will be more better. I get a new sum to you. Wait, or should we do a sum which is already done? We have many sums which are already done. That will save time, nothing else. So final accounts, okay, this sum is there. I think in video this only sum was there. Just a minute. Okay. If you want, I'll share this sum in the group. Wait. If you want me to solve any new sum, I'll share that in the WhatsApp group. That will be easier for you to refer. Okay. There's a lecture going on just next to me in your college. Studying. Okay. I'll take one sum. My goodness, it's very loud. और disturbance हो गया मुझे. Okay, let us start. I hope you are comfortable, not getting disturbed with the noise which I am here getting disturbed with. Okay, please put in chat. Oh, messages. I lost all the messages. Where are those ones? Okay, let me take one new sum. Wait, give me a minute. I'll show you all the sums here. You can select out of those. Final accounts. Give me a minute.
याद किया था लगातार भूल गया कुछ पल के लिए जैसे वो चीज हो बैठा पर खुद वो संभाला महान व्यक्ति की आनंदित जीवन के प्रसंगों को याद किया कि इस तरह के कुछ नेता हम लाते थे कुछ काटते थे पर बाद में वे कुशल वक्ता बने यह बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया और अच्छी तरह आसन समाप्त हुआ खूब तालियां बजी तो वाहवाही होती है कहने का मतलब यह है कि मोदी की हिम्मत और आत्मविश्वास एक भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूची संचालक के रूप में प्रतिष्ठित होगा मतलब यहाँ पे 97 में Okay, I got one sum. Just a minute, I'm getting that sum into the Excel sheet. You can start with that. Okay, I'll share it. Okay, so this is the sum. We'll start with sum. Already, guys are in your live chat. The following is the trial balance of team as on 31st March 2024. So year end is 31st March 24. Trial balance is given as usual. Cash will go to asset. Rates and taxes, P&L, staff salaries, P&L, miscellaneous P&L, opening stock, trading, plant and machinery asset side, debtors asset side, creditors liability, purchases trading, sales trading, credit side. Then capitals will go to capital accounts. I'll change the names of capitals, capital account. Drawings even, then adjustments. Mangesh and Suresh were partner sharing profits and losses equally. So Mangesh, Suresh were old partner. So Ganesh, which you can see third partner, is admitted. Okay. See the second line. Ganesh was admitted to partnership on 1st January 23. So just 3 months back, he has joined in, isn't it? It means I'll first calculate time ratio. I'll show you what is time ratio. See, time ratio will be used to divide expenses in P&L account. Okay. Because we have to make pre and post column. See, this new partner, Ganesh, has joined partnership firm on 1st Jan. So he is there in the firm from Jan to March, Jan, Feb, March. Barabar? 3 months. He is there for 3 months. Clear? So he'll get share of profit in this 3 months profit. Clear? And remaining two partners will share profit for first 9 months. Are you getting it? So first of all, we have to find a time ratio, that is pre and post. I'll write pre and post. In pre, how many months are there? 9 months. In post, how many months are there? 3 months. So ratio is 3:1, isn't it? I hope you understood this. Okay, so this is the ratio. I'll write the ratio. Here I'll write months. Okay, one query is there on which we are asked. Professional charges are divided
in which ratio. If nothing is mentioned, you can use time ratio. Okay. In the absence, any specific information is not given. Okay. Then we use time ratio. Sometimes they may not give you the sales ratio. Then what you will do? Then again, time ratio will become your sales ratio. So time ratio is most important ratio in this sum. Okay. Clear? See, the sum looks like our normal sum. Okay, the only change is that your PNL will have bifurcation, pre and post. Okay, that is the only part which you have to learn. Okay, once you complete this sum, you will understand everything. Okay, so be there. Okay, okay. So first, you have to find this time ratio, most important ratio. Clear? Third adjustment, the new profit sharing ratio is 2:2:1. As I told you, in pre-period, that is from April to December, only two partners were there, Mangesh and Suresh. So profit of these 9 months will be shared by Mangesh and Suresh only. Clear? But in post period, who will share the profit? Mangesh, Suresh, and Ganpati also. Clear? So to distribute pre-profit, you will use old ratio, which is equal. So we can say 1:1. Are you getting it? 1:1. But new ratio is given as 2:2:1. It's given. Clear? So this is PSR for pre as well as post. Clear? This is pre, this is post. I need not repeat this. It is already written at the top, pre and post columns. Are you getting this, students? Sum is very similar to normal final accounts. Only thing is that a partner comes into the picture or is admitted or sometimes may retire or may die in between. So our PNL should be made in such a manner that we can clearly bifurcate what was the profit earned by old members and new partners. Is this clear, students? That is the main thing which you have to study. Okay. So now third adjustment we read. Next adjustment is miscellaneous expenses were outstanding 800 and tax paid in advance is 400. Okay. So we have to, before dividing this into pre and post, we have to do this adjustment. On which items? Miscellaneous and taxes. Taxes, yeah, rates and taxes. Second item in trial balance. Okay, so these two carry adjustment. Okay, we'll keep in mind. Machinery is to be depreciated 10%. So machinery again, and the depreciation effect will be divided into pre and post in time ratio. Clear? Then goodwill of firm was valued at 20,000, which is to be raised, and it is its full value, and then written off immediately. This is very important. This adjustment will carry 3 to 4 months. I'll show you this. Huh? Very important adjustment. Next, stock on 31st March. This is closing stock, trading credit and asset side. Okay. So now you know the sum very well. So shall we start solving this sum? Let us start. Okay. And this reduce a bit. Now it is visible for our bottom line. Okay. Okay. Okay, let us start posting. See, students, this is for 20 marks. Don't lose out marks on this chapter and piecemeal distribution. Okay. When I teach you amalgamation and conversion, you'll say, अरे सर ये भी उतना easy है. तो कल मजा करो, जो easy मिले solve करो. Okay. So let us start posting cash. We'll go to asset side. Cash. Value 59,400. I'll show you 2, 3 more sums of final accounts so that you can get a look at all the types of sums. Rent and rates, P&L. So rent and taxes, sorry. Okay, but first we have to make a note because some outstanding is there, na? Okay, or should I make it below that item only? Yeah, I'll do it here only. Okay, original tax amount is 35,400.
plus outstanding is there, isn't it? How much is the outstanding? In the third last, fourth adjustment. Outstanding taxes 400. So, sorry, it is advance. Sorry, yeah. Miscellaneous expenses are outstanding 800 and taxes paid in advance 400. So advance we subtract. Okay, good, I saw that. Advance. Okay, so advance we subtract. How much? 400. So what is the net amount then? 35,000. Okay, now which ratio will divide this? Time ratio. Okay, we have only one time ratio, no other ratio is there. So all the expenses will be divided using time ratio. Clear? If sales is given to you for pre and post, then those items which relate to sales like commission, discount, bad dates, advertisement, sales promotion, those will be divided using sales ratio. I'll take one more sum in which will cover that ratio, sales ratio. Okay. So now this rent, okay, what is the net amount? 34,400 minus 400 advance. That advance will appear on the asset side. Huh? Advance tax. How much? 400. Clear? And second effect we subtracted from that expense, rates and taxes. Now we have to divide this 35,000 in the ratio of 3:1. So how to divide? First take the amount into 3/4. Clear? Because pre-period is larger. Okay. So it has 3 shares and 4 shares. So 35,000 again into 1/4. I hope you understand this ratio. How to. एक मिनट खुल नहीं रहा है जस्ट अ मिनट स्टूडेंट जस्ट अ मिनट हाँ स्लाइड Thank you, sir. Students, so we were discussing rent and taxes. Total 34,400 was given to us in trial balance. Out of that 400 was advance, so we subtracted as usually we do and put it on the asset side. Okay. Now this 35,000, which is net amount, is to be divided in which ratio? Time ratio. Okay. If nothing is given, we use time ratio for all the bifurcation, all the distribution. Clear? If sales ratio is given, then items which relate or depend on sales will be distributed using sales ratio, except that all other items which you have confusion go for time ratio, nothing else. Clear? Okay. So I have distributed rates and taxes. Cash I already put on the asset side. Next, staff salaries. So again, I'll write 2 staff salaries. Okay, amount is 72,000. Is there any adjustment on staff salaries? No, I guess 72,000. How you will divide, students? First take 72,000 into 3/4. Okay. Again, 72,000 into 1/4. Clear? Yeah. Next, miscellaneous expenses. Yeah, there was an adjustment on this to miscellaneous expenses. I will open a bracket just below it. We can do a working note separately if you want. Amount is how much? 31,200. And we are told that outstanding is 800. So just add outstanding 800. Okay. And that outstanding is your liability. So put on the liability side outstanding miscellaneous expenses. Okay. Very usual adjustment. Okay. Very common adjustment. Just treat as you do it normally. Okay. How much was the outstanding? 800. Put on the liability side. Now comes the division part. Since we have to find profit separately for first 9 months and later 3 months, because factor was allocated in the later half, 3 months. Okay, so we need to bifurcate our P&L into 2 parts. Clear? So what is the net amount now? 32,000, isn't it? So 32,000 into 3/4, 24,000. Okay, then again
32,000 into 1 by 4, 8,000. Clear? Then opening stock will go to trading to opening stock. Trial balance only one effect. See, in P&L we are dividing same amount. Okay, so that is not two effects. Huh? Okay, when you divide amount into two parts, pre and post, it is not two effects. It is effect of one item. Okay, but bifurcation is there. Now, so opening stock is how much? 1,50,000. Then plant and machinery will go to asset side. What is the value? 63,000. Then debtors, 1,86,000. No RDD, so I'll put in outer column 186,000. Creditors on the liability side, creditors amount 81,000. I guess no adjustment is there. Then purchases, trading to purchases, 6,60,000. Then sales, by sales, amount is 10,80,000. Then capital, I'll put in capital account by balance. Okay, I have to change the name. Mangesh, Suresh and Ganesh. Mangesh, Suresh and Ganesh. Okay. So capital by balance I wrote amounts are 1,44,000, 72,000 and 24,000. Every item when you post it, you will get marks. Okay. You can score good number of marks. Don't worry about those difficult adjustments of goodwill and all. Okay. First, try to get what you can get as many marks as possible. So drawings, 90, 45 and 90,000. Now what are drawings? 45,000 and 9,000. Okay. Yeah, done. Okay. So post adjustment says old ratio was equal. Okay. Ganesh was admitted on 1st January. So we found out time ratio 3:1, 9 months and 3 months. Then they have given us new PSR 2:2:1. Okay. Then miscellaneous expenses were outstanding that we did. Prepaid taxes also did. Depreciate machinery, yes, we have to do 10%. So depreciate machinery, right, less depreciation. 10% will be how much? 6,300. In outer column will have 63,000 minus 6,300, 56,700. And this depreciation second effect we have to bifurcate. So depreciation on plant and machinery. Okay, what ratio will use? 3:1, time ratio always for any depreciation. Okay, so amount is 6,300 into 3 by 4. Again 6,300 into 1 by 4. Clear? Total should be 6,300. Yes. Then goodwill is there, that I'll take last. Then last adjustment 7 is closing stock. We'll give it of closing stock by closing stock. Value is 1,25,000. Second effect in the asset side.
closing stock 1,25,000. Yeah. Now the important adjustment. Goodwill of the firm was valued at rupees 20,000, which was to be raised at its full value and then written off immediately. Clear? Now, two adjustments we have to pass. One, goodwill raised and goodwill written off. Okay. Okay. Goodwill raised means what? See, the partners, they work very hard for their name of their firm, name of their company. Okay. So that pays off after certain number of years. Okay. They build reputation. Okay. So when a new partner is admitted, he will get benefit of that reputation directly. Okay, isn't it? If a new partner is admitted in a very established firm, he will reap the benefits of hard work of old partners. So what a way out is, the old partners raise goodwill and get credit of that goodwill. Clear? Okay, understood? So first goodwill is to be raised. Partners should give benefit. So their account should be credited. Okay, their account should be credited. First I'll show you the shortcut, then I'll show you the entry. Okay. So they should get credit, isn't it? So by goodwill, they should get a credit. Now, how much credit they should get? The full value is 20,000. Now, old partners, they have equal ratio, old ratio. So both of them will get equal share in that 20,000. That is 10,000 each. Clear? They should get credit, isn't it? आप काम करते आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, तो इतना सालों का मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए, क्रेडिट. ओके, समझ गए? तो अगर एंट्री तुम लोग को लिखना होगा, क्या करोगे? तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसका नाम क्रेडिट में डालें. टू एन कैपिटल एंड टू एस कैपिटल. समझे? क्रेडिट देने का मतलब क्या होता है? ओके, वी क्रेडिट हिज और हर अकाउंट, दैट्स इट. ओके, तो डेबिट साइड 20,000, क्रेडिट साइड 10,000 इच. हाँ, इतना सिंपल है. ओके, अगर तुम लोग को गुडविल से बहुत डर लगता है, कुछ डरने की जरूरत नहीं. ओके, एंड दिस गुडविल रेज एंट्री इज ऑलवेज फास्ट. तो इधर गुडविल कैश में लाया, गुडविल रेज किया, गुडविल रेज करके रिटर्न ऑफ किया. ओके, दिस एंट्री विल बी देयर इन ऑल द केसेस. ये एंट्री हमेशा होगा ही होगा. क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? वी राइट इन पार्टनर्स कैपिटल बाय गुडविल, दैट्स इट. ओके, नाउ दे सेड, देखो सेकंड हाफ में, which was to be raised, that we did at its full value 20,000 and then written off immediately. Cancel it out, they said. उसको हम लोग को बिजनेस में दिखाना नहीं है, तो उसको रिवर्स करने का. तो ऑन द ऑपोजिट साइड राइट टू गुडविल. ओके, विल राइट टू गुडविल. क्लियर? बट क्रेडिट में लिखा, डेबिट में लिखा, कैंसिल आउट हो गया. व्हाट इज द बेनिफिट एम एंड एस इज गेटिंग? So difference is that when you write off that goodwill, you write off in all the three partners capital account. मतलब ये जब असेट लेस होगा, राइट ऑफ होगा, डेप्रिसिएट होगा, तो उसका चार्ज तीनों को पड़ेगा. नाउ यू विल सी द डिफरेंस. ओके, तो भी तीनों न्यू रेशियो कितना है? 2:2:1. बराबर. टोटल कितना हो जाएगा? 5. ओके, न्यू आई राइट समवेयर, पीएस आई राइट हियर 2:2:1. टोटल कितना हो गया? 5. क्लियर? So how much is the M share in 20,000 into his share is 2. His share number of shares 2 out of 5. So it's a 40,000. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया. I'll do it again. 20,000 into his shares are 2 out of 5. So his share is 8,000. तो उसको क्रेडिट मिला था 10 और डेबिट कितना चार्ज हो गया? 8. मतलब 2,000 नेट उसको फायदा हो गया. क्लियर? सेम वे अभी किसका करेंगे हम लोग? एस का. उसका भी शेयर है 2, मतलब उसको भी 8,000 मिलेगा. और
जी का एक शेयर मतलब उसका आधा 4,000. नाउ ऐड देम अप, सी इफ इट इज 20,000. 8 8 16 और 4 हो गया. क्लियर. मतलब एक को नुकसान हो गया, उसने कोई ड्राइंग नहीं किया, फिर भी उसको 4,000 डेबिट पड़ा उसको. क्लियर. और उसका 4,000 इन दोनों को मिल गया 8 8. ओके ना. तो नेट दो दो इनको फायदा हो. तो दिस इज हाउ दे टेक बेनिफिट बाय पासिंग जस्ट मियर एंट्रीज. एक को डेबिट कर देते हैं और दोनों को क्रेडिट कर देते हैं. क्लियर. अभी इसका आप एंट्री मारोगे तो क्या एंट्री आएगा इसका बोलो. अभी क्या इंडिविजुअल पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, बराबर. हाँ. तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. तीसरे को भी शेयर मिला लॉस का. ठीक है. जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गुडविल राइट ऑफ हो गया. ओके. गुडविल कितना राइट ऑफ किया 20,000. और किसी को चार्ज लगा, एम को 8 लगा, एस को 8 और जी को 4. क्लियर. So whenever you will have adjustment that will raise and written off, सिर्फ इतना ही करना है. ओके. या फिर कैपिटल अकाउंट में सीधे क्रेडिट पे और एक डेबिट पे, इतना ही करना है. क्लियर. समझ गए. ओके. If they had told us that new partner contributed goodwill और his share in cash, तो जितना कैश आएगा उसका हम लोग को एंट्री पास करना. वो अभी नहीं लेगा, अगले समय किधर तो मिलेगा. We'll check other sums also. Okay. So this is done. Now you can close this account and I'll show you. ये हम लोग पहले अकाउंट बंद कर देंगे. टोटल 125 लाख 12 lakh 5,000. Right, same total on the opposite side. 12 lakh 5,000. From that we'll subtract total of expenses. Total is 8 lakh 10,000. Okay. So we'll get gross profit to gross. Okay, normal. So difference is GP is 3,95,000. Okay. So it will come in P&L by gross profit. Now here again, if sales ratio was given, we would have used sales ratio to divide GP into pre and post. But since it is not, we'll use time ratio 3:1. Okay. So how you divide? How much amount is to be divided? 3,95,000 into pre has 3 shares out of 4. Clear? Again, take the amount 3,95,000 into 1 out of 4. Is this clear? दोनों को ऐड करके देखने का. इधर amount having yes. Clear? Now we'll close this account. Okay. Profit which will come in pre will go to only M and S, and the profit which you will get in post column will be distributed among all the 3 partners. That is the change. समझ गए? Just copy it here. Okay. Now we'll find profit. Okay, पहले इसका टोटल ले लेता हूँ तो अपने को टोटल एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे. This is just a total. Okay. So I'll write to net profit. How to present net profit, I'll show you. Okay, first write net profit, then write all 3 partners name. Okay. First is M, S and G. Okay. Now in pre column, how much is the profit? Pre में कितना profit है? I'll just calculate 29,620. Okay. 29,620. ये कैलसी पे आप करना, इधर लिखना मत अकाउंट के अंदर, माइनस टोटल एक्सपेंसेस.
So total is 187,275. This is your net profit. And who is eligible to get share in this? The old partners only. जीत अभी था ही नहीं फर्स्ट 9 months, so he'll get 0 share. Okay, okay. और उनको कैसा था, इक्वली था, तो 18275 187,275 डिवाइड बाई 2 करो, तो ये दोनों को शेयर मिलेगा उसका. क्लियर. एक जन को 50 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, एक जन को कम. ओके, आई विल डू दैट डिवाइड बाय 2. ओके, इसको 38 देंगे हम लोग, 93638, और दूसरे को एक कम देंगे, 93637, और ऊपर वाले को 8 देना, 93638. क्लियर. Is this clear, students? Okay. Same way now we'll find profit for post period, in which even G will get his share minus total expenses. Okay. So this is the profit. Now all three will get share in this profit, but ratio is 2:2:1. बराबर. So how much M will get? 62425 into 2 out of 5. Okay. Same is for S and half of that for G. बराबर ना, उसको आधा मिल रहा है ना, उनको दो दो, इसको आपके देखो एक शेयर. क्लियर. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट. नाउ हाउ टू पोस्ट इन कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में कैसे पोस्टिंग करोगे, आई शो यू. तो राइट, फर्स्ट बाय नेट प्रॉफिट. ओके, उसके नीचे फ्री और उसके नीचे पोस्ट. क्लियर. तो फ्री का प्रॉफिट लिखो 93638, और दूसरे को है 93637. पोस्ट का तीनों को है ना, 24,970, 24,970 and 12,485. Clear, students? Now we have to close this account, capital account, and get balancing figure here. Okay, and that will come in liability side. Okay, capital. Okay, M, S, and G. Clear? I'll add these. How to get profit balancing figure? We'll write two balance. Okay. So total minus drawings minus goodwill. Okay. So this will do for remaining partners also. Now these figures will go to capital. Okay, now this must tally, this valuation must tally. Okay, you will get full 20 marks. सभी चेंज करो, आ गया, so no difference. Okay, understood how to solve this sum. तो फाइनल अकाउंट भी अगर आ गया तुम लोग को, हाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. ओके, एक टाइम लेगा आपका, एडजस्टमेंट थोड़ी इधर उधर होंगे और कुछ नहीं. अच्छा, सेफ ने सम सॉल्व भी कर दिया. वेरी गुड, वेरी गुड सेट. स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए, 19 बचे. ओके, कोई बात नहीं. So I'll show you other sums also in final accounts. ये तो मैंने लास्ट ईयर के बच्चों के लिए सॉल्व किए थे तभी, अभी भी पढ़े. मैं 2 दिन ये फाइल ही ढूंढ रहा था, मुझे फाइल ही नहीं मिल रही थी. तो कल मुझे मिली तो मैंने ग्रुप पे डाला, आई विल टेक सम्स. ये तो इतना बनाने में पूरा हफ्ता जाता है.
तुम ढूंढो, फोटो निकालो, वो फॉर्मेट बनाओ. ओके, नाउ विल हैव लुक एट दिस सम. ये सम देखते हैं. इसमें कुछ नया है तो तुम लोग नया सीखोगे. ओके, लेट अस सी. ट्रायल बैलेंस. ड्राइंग्स कैपिटल डेबिट परचेज मालूम है. गुड्स रिटर्न, ये डेबिट में मतलब सेल्स रिटर्न. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, सैलरी पीएनएल, टाइम रेशियो, ऑफिस सैलरीज, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल, बैड डेट्स पीएनएल, सेल्स रेशियो में जाएगा. बैड डेट्स कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा. ओके, कैरी आउटवर्ड सेल्स रेशियो. डेटर्स असेट, बिल रिसीवेबल असेट, बैंक बैलेंस असेट, कैश असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, बिल्डिंग असेट, रेंट एंड मशीनरी असेट. क्रेडिट साइड कैपिटल विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, रिटर्न दीज आर परचेज रिटर्न, हमेशा ऑपोजिट रहते हैं. बैड डेट प्रोविजन पीएनएल क्रेडिट साइड. बैंक लोन लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल रिसीवेबल लाइबिलिटी, अदर लोन लाइबिलिटीज. Okay, now let us see what is the adjustment. Goodwill was to be raised 30,000 and brought into books. तो सिर्फ रेज करना है. ओके, रेज का एंट्री क्या बताया. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. अभी इसमें एडमिशन कौन हो गया है, जरा टेबल के नीचे फर्स्ट लाइन रीड करो. ऑन 1 जुलाई 2003, व्हाट इज द ईयर एंड, दिसंबर. तो 1 जुलाई मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स वर जैन टू जून. तो इसका टाइम रेशियो क्या आ गया. टाइम रेशियो 1:1. समझ गए ना. ओके, टाइम रेशियो 1:1 है. ओके, तो पार्टनर was admitted on 1 July 2003. ओके, एंड ईयर एंड इज 31 December, मतलब जैन से स्टार्ट हो गया. तो जैन टू जून फर्स्ट 6 मंथ्स प्री पीरियड, जुलाई टू दिसंबर सेकंड 6 मंथ्स पोस्ट पीरियड. ओके, तो रेशियो इज 1:1. ओके, हाँ. गुडविल वाज टू बी रेज्ड 30,000 एंड ब्रॉट इनटू बुक्स. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. इसमें नया पार्टनर कौन आ गया है, ई. ये नया है, मतलब ओल्ड कौन पार्टनर है, बी एंड एल. अगर उनका भी पीएसआर कहीं पर दिए थे चेक करके. द फॉलोइंग द ट्राइबेंस ऑफ मेसर्स ए बी एंड एल. एक मिनट जरा ढूंढ लो नया पार्टनर कौन है. ए है ना. ओल्ड, हाँ लिखा तो ए. तो फिर कोई बात नहीं, ए को नया पार्टनर पकड़ेंगे. ओके ना. तो यहाँ पर बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग द आइटम्स. हाँ, समझ गए ना. नाम पहले कैसे लास्ट वाला पार्टनर का नाम तो रहता था ना, वो न्यू एडमिशन होता था. यहाँ पर उल्टा किया लोगों ने. तो बी केयरफुल. ओके, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल ना, तुम लोग गलती से ए बी को ही दे दोगे एम को देने के बाद. हाँ हाँ, बी और एम को देना है, ए बी को दे दोगे. क्लियर. तो बी केयरफुल. हाँ, गुडविल वाज टू बी रेज्ड. ओके, तो इसका एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी एंड टू एम. ओके, जो ये नया पार्टनर है. हाँ, तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट में जाएगा बाय गुडविल. और किस में डालोगे, बी और एम में. ये नया पार्टनर है एज दिस टोल्ड अस. Machine worth 24,000 was purchased on 31st March 2003, but the purchase invoice was not recorded in the books. Okay, this is unrecorded purchase. तो मशीन परचेस है तो मशीन में ऐड होता है. हाँ, तो चेक वेयर इज मशीन. मशीन कहाँ पर, एक कॉलम छोटा हो गया. आई जस्ट कॉलम विथ मशीन को बनाया. हाँ, यहाँ पर प्लांट एंड मशीन, यू कैन सी प्लांट एंड मशीन 12,000 बराबर. लास्ट आइटम इन ट्रैवल 12,000. ओके, और अभी एड अनरिकॉर्डेड कितना बोला उन्होंने, 24,000. तो ऐड करना, तो टोटल मशीन इज 36,000. ओके, लेकिन ये जो नया एडिशन हो गया कभी हुआ है, 31 मार्च. मतलब 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन ऑन दिस 24,000. ओके, 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन चार्ज हो. ये मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है तुम लोग के लिए, लेकिन ओके है. तुम लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे करोगे ना, यू कैन यूज दिस स्क्रीनशॉट. ओके, मैंने यहाँ पर इससे सब एडजस्टमेंट किया हूँ. यू कैन यूज दिस. तो अटेंड नहीं करा लेक्चर. अभी आप फाइनल अकाउंट चल रहा है. वो लिंक भेजा वो देख रहा हूँ. हाँ, वही चल रहा है. वो अभी वही चल रहा हाँ, है. अभी लाइव ले रहे हो आप. लाइव चल रहा है.
पर वो 2 साल पहले का है। हाँ, दिखा रहा हूँ अभी लाइव, एक फर्स्ट सम लाइव किया ना अभी, ये सिर्फ अभी टाइम ज्यादा नहीं ना, इसलिए ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ जो चेंज है। हाँ देख देख बैठ के देख के। जो एडमिशन अभी रिटायरमेंट वाला है, वो 2 साल पहले का समझा। ये क्या रिटायरमेंट है ये? नहीं भेजा है। हाँ, लिंक में वो पिछले ही सम, अभी आप लाइव कर रहे हो, वो लाइव में नहीं वो भेजा। पिछले वाली दिखा रहा हूँ। मतलब अभी एक किया सम पूरा नया। तो लाइव तो नहीं भेजा आपने। तुझे लाइव नहीं मिला? लाइव नहीं भेजा आपने मेरे को, पुराना वाला जो सम था ओ ना, हो वो हो भेजा। चल मिसाइल इंग्लिश सम। आपको भेजा। तो ग्रुप में नहीं है क्या इस वजह? नहीं, मेरे को आपने ये भेजा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे ओके वो ही मैं देख रहा मैं था। भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। वो भी मैं देख लेता हूँ। हाँ वापस से हैंड सेंड कर दो। 2 मिनट्स, मेरे ध्यान से निकल गया तो। आपने मेरे को भेजा, पर वो हाँ वो भी सिमिलर ही होगा। हम्म, ये रेफर कर लूंगा, आप मेरे को भेजोगे तो वो सब हो जाएगा। हाँ बस हो गया, आपने आया मैसेज आपको? आ गया आ गया। 2 मिनट रिवाइज कर सकते हैं ना ये लेक्चर आपने जो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, हो जाएगा। नहीं, अभी आपने जो शाम को लाइव भी, एक शाम को भी लेने वाला हूँ, वो अमालगमेशन और इसका रहेगा, कन्वर्जन। कन्वर्जन। अभी फाइनल अकाउंट और पीस मिल गया अभी आप सिंपल। जो ये सम कराया वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा ना? हाँ अभी है, मैं लिंक बंद नहीं करूंगा, हाँ। मैं बंद करने वाला हूँ, लेकिन अभी तू है तो ले ले। हाँ बंद नहीं करता हूँ। मतलब देख सकते हैं ना बाद में? हाँ अभी मैं ये आधे घंटे बंद करूंगा, तो वो देख ले शाम तक। शाम को ही नया लाइव लेने वाला हूँ। ये शाम तक देख सकते हैं अभी जो हाँ रखूंगा, मैं नहीं करूँगा, तेरा बाकी है ना। ओके ओके स्टूडेंट्स, we were discussing machinery. Okay, so machinery already 12,000 balance was there. On machinery 12,000 value you will charge full year's depreciation, but there is a new purchase of 24,000. Okay, and it is used only for 9 months, so charge only 9 months depreciation. लेकिन वो 9 months कौन से पार्ट में डालोगे, प्री में पोस्ट में कैसे डालोगे? ओके, जो 12,000 स्टार्टिंग से है आपके पास पड़ा, उस पर पूरे साल का आप 6 6 महीने मतलब इक्वली बांटोगे, बराबर 12,000 ओल्ड पार्ट पे। लेकिन जो न्यू मशीन परचेज किया है, मैंने नीचे दिया देखो एडजस्टमेंट, चलो अच्छा है, वर्क में मैंने कैंसिल नहीं किया है। माय कर्सर ऑन, हाँ ओके लुक हियर, मशीन ओपनिंग 12,000, तो उसका 1200 10% आ गया, वो प्री में 600 और पोस्ट में 600 जाएगा। ओके, न्यू मशीन जो परचेस हुआ 24,000, ओके ना, वो कभी लिए हमने, न्यू मशीन परचेस 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से यूज हो रहा है, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना का डिप्रिसिएशन प्री में जाएगा, और पोस्ट में फुल टाइम है 6 मंथ्स, तो 1200 पोस्ट में जाएगा, तो टोटल डिप्रिसिएशन होता है। ओके ना, आपको कैसे बैठना है समझ गए? 1,200 और 1,800, 3,000 टोटल है, लेकिन प्री का कैसे आएगा? देखो यहाँ पर वर्किंग में पूरा दिखाई डिटेल में, ओपनिंग का 12,000 के ऊपर 10% प्री पोस्ट में आधा आ जाएगा। जो न्यू मशीन है उसका प्री में 3 महीने हुए, क्योंकि मार्च में लिया ना, तो अप्रैल में जून इसका 3 महीने का डिप्रेशन 600 है, वो प्री में पड़ेगा, और जुलाई टू दिसंबर इसका डिप्रेशन 6 महीने का पोस्ट में पड़ेगा। क्लियर? तो यू कैन सॉल्व दिस सम। नेक्स्ट, balance standing to the credit of A after giving the effect of the above was to be treated as loan to Mr. to Mrs. A। एक मिनट, ये कौन सा एडमिशन की रिटायरमेंट है? अच्छा अच्छा, ये दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको सम चेंज करके एडमिशन को रिटायरमेंट किया शायद से। ओके, एडमिशन रिटायरमेंट डेट कुछ भी हो, आपका सम 90% सेम ही रहने वाला है। ओके, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट बदली नहीं होने वाली, तो सम ऐसा रिटायरमेंट दिखा तो डरना मत, डेथ दिखा तो डरना मत। ओके, आपका अगर आप 30 मिनट्स ले रहे हो सम का, तो 20 22 मिनट्स तक आपका सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है, नथिंग विल चेंज, बाइफरकेशन, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, नथिंग विल चेंज। ओके, समझ गए ना? आउट ऑफ 20 15 मार्क्स तो आपके किधर नहीं जाएंगे, नॉर्मली सॉल्व करना। ओके, इन केस सपोज ये अगर ए रिटायर हो रहा है ना, तो मैंने शायद से सम चेंज किया था,
हाथ से लिखा है मैंने रिटायर्ड करके, इट वॉज एडमिटेड था, लेकिन मैंने यहाँ पर सम को कन्वर्ट करके रिटायरमेंट का सम बना दिया। ओके, ऑन 1 जुलाई 2003 ए रिटायर्ड लिखा है, पेन से लिखा है। ओके ना, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इन योर टाइम रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पूरा सब जैसा था वैसा ही करना है, नो डिफरेंस एट ऑल। जब हम लोग क्लोजिंग करने जाएंगे ना तब डिफरेंस आएगा, तब तक कुछ चेंज नहीं है ना, कोई भी एडजस्टमेंट हो। ओके, मशीन का दिखाया मैं तुम लोग को, थर्ड वाले पेंडिंग रखना, बाकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग। फर्दर एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट मालूम है। ओके, ट्रेडिंग और असेट साइड, बैड डेट्स प्रोविजन 1500, पीएनआर क्रेडिट साइड। ओके, वो भी आप इक्वली बांट दो टाइम रेशियो। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी और डिटेल में दिखाया है, बिल्डिंग का 5% बोला है, तो बिल्डिंग का कुछ नहीं बोला तो हाफ हाफ बांट देना दोनों। ठीक है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। 15% interest on partners capital is to be provided। हाँ, दिस इज important adjustment, आई शो यू। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। हाँ, तो पार्टनर्स को क्रेडिट मिलेगा ना उनका इंटरेस्ट का, तो इन पार्टनर्स कैपिटल विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख सेकंड लाइन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, हाउ यू विल कैलकुलेट, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लेना है 12,000 के ऊपर, इनटू हाउ मच परसेंट, 15%। ओके, समझ गए। और जो आएगा वो हम लोग को पीएल में प्री और पोस्ट में बांट, कैसे बांटोगे, प्री और पोस्ट में बांट, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए रिटायर हो गई 6 महीने बाद तो उसको पोस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, प्री में मिलेगा। बी का जो भी इंटरेस्ट आएगा, ओके ना, कितना आ रहा है 1800, तो दोनों में बांटोगे प्री और पोस्ट में। ए का इंटरेस्ट जब निकालोगे तो कितना निकालोगे, सिर्फ 6 मंथ्स का, तो 12,000 इंटू 15% इंटू 6, बिकॉज 6 महीने के बाद वो पार्टनर नहीं बनी रही। ओके, तो 6 मंथ्स का सिर्फ प्री में आएगा, बाकी दोनों का पोस्ट में भी आएगा, प्री में भी आएगा। इज दिस क्लियर। हाँ, ईच पार्टनर इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1200 पर एनम। तो अगेन पार्टनर्स को क्रेडिट देना तुम लोग को, तो बाय पार्टनर सैलरी, दोनों को तीनों को कितना 1200 पर एनम बोला, तो फर्स्ट पार्टनर जो है वो सिर्फ 6 महीने तो 600 मिले, बाकी दोनों को 1200 क्लियर। आप पीएल में कैसे दिखाओगे ये सैलरी टू पार्टनर्स, ए का अमाउंट सिर्फ प्री में रहेगा और बी और एम का दोनों में प्री पोस्ट में इक्वली बांट देना, हाँ, टाइम रेशियो। क्लियर। देन लोन ऑफ 300 was given to worker but is wrongly debited to salary account, क्योंकि तो सैलरी में से हटाना है अपने को ये अमाउंट। ओके, और वो असेट साइड में डालते हैं, एडवांस टू वर्कर, छोटा एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस में ऐड करना है, बाद में उसका डिवीजन करना है, रिपोर्ट। ओके, स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम, और कुछ उस साइड है देखने को। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये तो बना ही रहेगा यूट्यूब पे। I was going to remove this or make the link private, but a few students have just seen the video and they are watching it. I will not make it private. ये रिटायरमेंट का समय देखो इजीली अपना हो भी गया। ओके, तो रिटायरमेंट का समय रहेगा तो सेम 90% आपको सेम सम सेम तरीके से ही सॉल्व करना है, नथिंग न्यू। अब क्लोजिंग में क्या चेंज होगा, एल फर्स्ट फिर क्लोज ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, बराबर, वो भी आप टाइम रेशियो में बांटोगे, बराबर, इक्वली, इसमें इक्वली, इसमें इक्वली। कोई और रेशियो होता है टाइम का, जैसे लास्ट समय था 9 मंथ्स 3 मंथ्स, तो उस रेशियो में बांटोगे। क्लियर। ओके, फिर प्रॉफिट, एज आई शोड यू, नेट प्रॉफिट जो है फर्स्ट हाफ का तीनों में बांटेंगे हम लोग। ओके, देखो पीएल में इधर कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है बाय नेट प्रॉफिट प्री और पोस्ट। पोस्ट में एक को प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा, प्री वाला प्रॉफिट तीनों में बटेगा, डिवाइड बाई 3 करके, और पोस्ट वाला सिर्फ दो में बटेगा। ओके, रिमेनिंग बी और एम में, समझ गए ना। व्हाट इज द चेंज, देखो चेंज है ना, थर्ड एडजस्टमेंट दिया है पहले वाले पार्ट में, थर्ड एडजस्टमेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, समझ गए। अभी हम लोग ने प्रॉफिट बांट दिया, नाउ विल क्लोज द अकाउंट।
Now look at the debit side of partners capital account. Okay, डेबिट साइड में देखो, ड्राइंग से डेबिट साइड में. ओके, और बैलेंस जो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस रहता है, ए इज नो मोर विद द कंपनी एज अ पार्टनर, तो उसका बैलेंस जीरो आएगा. तो उसका जो भी डिफरेंस है ना, यू राइट सेपरेटली, लाइक मिसेज ए इज लोन या मिस्टर ए इज लोन. ओके, राइटिंग अनदर लाइन, समझे. और वो लोन कैपिटल के नीचे अलग से लिखा, लोन फ्रॉम ए. समझ गए. when you close the capital, okay, whatever balance is shown in retiring partners capital account, right against that to A's loan and show it on the liability, A's loan. Okay, फिर उसके ऊपर थर्ड एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट का रेट दिया है, कितना दिया है, 15%. तो 15% हम लोग को 6 महीने के लिए उसने लोन दिया है, बराबर. तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1668, बराबर. और ये जो लोन है अपने को उसके रिटायरमेंट के बाद मिला है, मतलब ये इंटरेस्ट 1668 आपके पोस्ट पीरियड में जाएगा पीएन. ओके, इसलिए जब आप क्लोज करोगे अकाउंट्स, पहले ट्रेडिंग क्लोज करना, पीएनएल का सिर्फ प्री क्लोज करना, पोस्ट क्लोज करना मत. क्यों, पहले प्री क्लोज करके प्रॉफिट लेके आ जाओ कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट बंद करो, ए का लोन का अमाउंट फाइंड आउट करो, उसको लाइबिलिटी में डालो, उस पर इंटरेस्ट निकालो, वो इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड में दिखेगा. ओके, अब आप पोस्ट क्लोज करो, तीनों में दोनों पार्टनर्स में बांट दो, फिर ये दोनों का भी अकाउंट बंद कर दो, देन यू शो दैट एज बैलेंस कैपिटल, फिर ये आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस. ये था रिटायरमेंट. डेथ में भी सेम वे करना है आपको क्लोज. रिटायरमेंट और डेथ में लिटरली कोई डिफरेंस नहीं. डिफरेंस इज दैट जहां पर हमने ए रिटायर हो गया उसका सेपरेट लाइन में लिखा ना, टू इज लोन, वहां पर लिखना टू लीगल हेयर ऑफ मिस्टर और मिसेस ए, ऐसे लिखना टू लीगल हेयर ऑफ ए. बाकी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट सेम वैसे ही करना, पोस्ट में डालना, फिर पोस्ट वाला क्लोज करके बैलेंस का. समझ गए. तो रिटायरमेंट डेथ ऑलमोस्ट सेम, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑलमोस्ट 90% सेम. I hope you learned a lot from this sum. Okay, now I have got exhausted. Okay, तो आप काम करो, जो भी पढ़ाए 2 चैप्टर को रिवाइज करो. इन द इवनिंग I will teach you amalgamation and piecemeal conversion of partnership firm into limited company. Okay, so thank you students for attending this lecture. Okay, any queries please put in live chat or message me. I'll stop the lecture now. Okay, thank you students, bye, take care.